And of course our latest Dharagi Bank with Anna, which just blew out of proportion. It did about 600 million minutes of watch time, which is one of the largest shows on MX. Thank you, Anna. It is also his comeback, so we had a lot of pressure to ensure that the show does extremely well, and of course, he's done a great job in it. And if you see that we've steered clear from sports, and when we met Ali Bhai on this particular sport and this particular show, we believe that we could add a lot of value in terms of taking it to every part of the country and every corner in the country, and of course, we're dedicated to the passion that he had for the show. And as a sport, I think combat sport lends well to one of the biggest genres that we have on the platform, which is action. So action films, action shows हमारे platform पे सबसे ज़्यादा consume होते हैं. So we thought that this is a show that also lends to that. It also is very inspirational. So from that sense, it made a lot of sense to get into this. Hi, this is Russell here from PTI, straight ahead, in the middle. Andre सवाल पूछो. Sunil sir. Andre So before I ask my question, also congratulations and all. Thank you so much. Sir, when it comes to fitness, when it comes to being an action superstar, when it comes to all that, you have been one of the actors, who redefined that mold, in, especially through the 90s. So is this your way also of taking the legacy forward and giving back a lot to the common people through the show? Absolutely, bang on. I think you've asking the question and giving the answer too. What's very, very... see, I became who I am. I got that action image only thanks to my martial arts background. I didn't know the A of acting, and my first film proved that. I was called Wooden after that. But it was only that action and the excellence in action that got me lot many more films where I learned the art of acting. So yes, it is, and because it is also one of the toughest spaces to be in, you want to encourage the kids. MMA is probably a combination of 30 to 36 various arts of fighting that combine together to prove and see who's one among the best. So, and I know that India can be right there on top because our grappling, our wrestling is probably one of the most dangerous formats of fighting, because once you get the other fighter in your hand when it comes to a wrestler and you're in that lock, it's very difficult to get out. So when I realized that this is something that needs that kind of push is when I put my hands up, and hats off to Tohim and MX and them all to believe in something like this and say, nahi yaar, koshish to karenge. And like everybody said here, our janam din hai, probably birth, we'll grow and we'll grow fast with fighters like these and talent like this coming out from India. Sir, आपका background को देखकर action, martial arts का background, when you already had these tools in your artillery, आपका भी मन किया रिंग के अंदर जाने को इन फाइटर्स के साथ? Absolutely, मन तो बहुत करता है, लेकिन उम्र बोलती है मत चालू कर, तकलीफ में आ जा, फिर जाएगा इन चैंपियंस ये लड़कियों को देखोगे आप तो मैं भी चैलेंज करूँगा अच्छे होकर कि आ जाओ रिंग में. मेरे साथ मेरी टीम हमेशा रहती थी. So when we used to see some of the girls fight, मैं बार विजय को बोलता था रिंग में जाएगा, बोलता नहीं भाई. I said, give me 2 minutes यार. नहीं इनके सामने जाऊँगा. They are terrific when it comes to fight. They don't know the word give up. जब तक फाइट को ब्रेक नहीं करते थे, ये बच्चे छोड़ते नहीं थे. And for me, मैं खुशी भी थी क्योंकि मेरी टीम में से कोई दूसरे को चित कर रहा था, लेकिन जो कभी कभार हार भी रही थी तो वो भी मेरी अपनी थी. तो एक बाप के नजरिए से देखो तो मुश्किल होता है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, but finally you're preparing Team India, and that's the dream that all of us have. एक सवाल मेरा खली जी के लिए भी है. खली जी, आप एकमात्र इंडियन रह चुके हैं जो WWE में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का टाइटल आपको मिला.
और मुझे वो मैच अभी भी याद है, आपने शायद केन और बिग शो को ओवर द टॉप आपने फेंका था और आपने वो 15 मैन ओवर द टॉप रंबल जीता था। सर सवाल ये है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि MMA में हम इंडिया का टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू WWE आपके बाद कोई इंडियन वहाँ पे इतना बड़ा इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाया। व्हाट इज उसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या इंडियंस को उस दिशा में प्रमोट करने के लिए आप कुछ करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि भी यहाँ पर इंडिया पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत टफ है, क्योंकि स्पेशली जैसे MMA लगा लो आप, और दूसरी ये प्रो रेसलिंग लगा लो आप, जो WWE आप देखते हैं। सो मेरे बाद मेरे गए कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे वहाँ पर गए हैं, तो चलो कितने मतलब उनको सक्सेस मिलती है वो तो एक बात की बात है, लेकिन मतलब मेरे 10-12 लड़के हैं जो मेरे CWE से WWE में गए हैं, और मेरे को अच्छा लगता है कि भी मैं WWE को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर WWE के कॉन्ट्रैक्ट थे, हॉलीवुड के मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट थे, और मेरा अपना वहाँ बिजनेस था। तो लेकिन मेरे जैसे बोलते ना यार कि मैंने मतलब मुकेश अंबानी नहीं बनना नहीं यार, मेरे पास मतलब परमात्मा ने इतना दिया है कि जरूरत से ज़्यादा दिया है। मैं कभी सोचा नहीं था आपने कि हम जो हमारी बैकग्राउंड है, हमारी बहुत जैसे बोलते ना पोर फैमिली से आती थी, सो हमारे को बहुत दिया, इतना सोचा ही था कि इतना भी मतलब। सो मैं सारा कुछ छोड़ के वहाँ पर मैं वापस इंडिया आया। मेरा ड्रीम था कि भी यार मेरे जैसा सपना था WWE पे जाने का, तो क्यों नहीं मैं इंडिया पे जाऊँ और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दूँ, जो मेरे जैसे लड़के और भी हैं, और उनको WWE में भेजूँ। सो मैं 2015 पे वापस इंडिया आया। मेरे काफ़ी सारे लड़के हैं जो यहाँ से WWE में गए, और वो अब वहाँ पर वो बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं होता था यहाँ पर, मतलब एक नौकरी के लिए तरसते थे, वहाँ पर उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है यार, मतलब मेरे जिस सोच को लेकर मैं इंडिया में आया था, तो सोच में मैं बहुत सक्सेस हुआ हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे जो वहाँ पर WWE पे गए हैं, और यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े इवेंट करे, मतलब यहाँ पर जो इंडिया में। सो बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है मतलब जो नया एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, पर लेकिन अगर अच्छे लोग मिल जाए तो हो सकता है, मतलब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत जैसे कनाडा में लगा रहता था मेरा, क्योंकि तो यहाँ पर अगर सरकार थोड़ी सी सपोर्ट करे, तो यहाँ पर हर स्पोर्ट्स बहुत आगे आ सकती है। यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या है कि भी वो सिर्फ सरकार का क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होता है, और बाकी क्या बोलते इसको, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो इधर के इस पे खर्च करते हैं, लेकिन वो सही अगर उनको दे ना, जैसे ये MMA ला रहे हैं कि भी आप करो, हम सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ऊपर जा सकती है गेम, बहुत आगे निकल सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है, जिसमें मैंने फाइंड आउट करी इस पे, प्रॉब्लम क्या है कि जो जब आप कुछ करेंगे ना, तो सरकार आपके पास ना इतनी लंबी लिस्ट ला देंगे कि ये परमिशन, ये लाइसेंस, ये फलाना लाइसेंस, बंदा ना ऐसे ही फेड अप हो जाता, छोड़ यार कहाँ, मतलब मैं मतलब एक कंट्री के लिए, यंगस्टर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग सरकार करने नहीं देते। सो अगर हम सब लोग मिलके, जैसे अगर हमारे जैसे बोलते हैं मजबूत रहते हैं, तो हम लोग इसमें कामयाब होंगे। मतलब तो मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ, और अगर सरकार सपोर्ट करता है ना, तो बहुत आगे जा सकती है। ये लोग क्या है कि मतलब इधर इतना पैसा बर्बाद करते हैं, जैसे बोलते ना, एक ग्राउंड के लिए पैसा देंगे तो 50 करोड़ दे देंगे, अगले साल उनको फिर बोलते हैं यार हमारे को ग्राउंड बनाना है, हमारा स्टेडियम बनाना कुछ,
पता नहीं कहाँ पैसा जाता है। और मैं दूसरों में बताना चाहूंगा मतलब ना जो अपने जो ये बोल सकते कि बजट इतना बजट देते हैं, मेरे को नहीं लगता इतना फॉरेन के लोग भी बजट देते होंगे जितना हिंदुस्तान में बजट शो करते हैं, पर लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, कौन कहाँ लेता है, उसका नहीं पता लग रहा है। इनके पास ना तो कोच अच्छे होते हैं और ना इनके ग्राउंड अच्छे होते हैं, ना कोई और फैसिलिटी होती है, पर बजट इतना देखो आप अगर कभी बजट देखेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना बजट मिला ना अमेरिका की सरकार भी नहीं देती होगी स्पोर्ट्स के लिए जितना यहाँ पर देती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से जो मैं सभी को नहीं बोलूंगा, कुछ लोग जो दूसरे जो गेम के है वहां पर देखो ना कैंप लगाएंगे, ये लगा रहा जो अमेरिका कैंप, ये लगा रहा फलानी जगह कैंप। मैंने खुद देखे हैं फॉर्मेलिटी के कैंप लगाते हैं, फॉर्मेलिटी के कैंप लगाते हैं और वो सारे आपको माहौल पे देखने को मिलेंगे, मतलब जो उनके कोचेज भी और उनके स्टूडेंट भी। सो इतना पैसा बर्बाद करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर उसमें से 5% सपोर्ट करे, जैसे MMA में कि भाई आप बस करो, हमारे को, मैं कहता हूँ कि हमारे को पैसे की भी जरूरत नहीं है, हमारे गेम को पैसे की जरूरत नहीं है कि हमारे को आप पैसा दो हम तब स्पोर्ट्स करेंगे, हम कहते हैं खुद करेंगे। MMA और दूसरी क्या बोलते हैं उसको प्रो रेसलिंग है, हम खुद करेंगे, खुद पैसा लगाएंगे। पर जो सरकार का रोल पता क्या होता है, अगर बात मतलब अगर एक चीज मेरा दूसरा है कि अगर आप सोचेंगे कि भी हम फ्री पे दिखाएंगे, फ्री पे यहाँ पर हिंदुस्तान में ना फ्री की आदत पाई है ना, फ्री की कभी कदर नहीं होती, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्री पे दिखाएंगे तो यहाँ फ्री पे कदर नहीं होती, और फ्री की आदत डाली है सरकार ने, फ्री की आदत डाली कि हम आपको फ्री पे देते हैं। बात माने आपने अपने जेब से करोड़ों रुपए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग ना अभी आप शायद आपके अभी आएगा वो स्टेज, अभी आएगा आपका स्टेज हो, जब आप सोचे ना कि यार बहुत ग्रैंड हमने मतलब एक वो करना है, एक शो करना है जिसको इंटरनेशनल होएंगे और नेशनल के होएंगे सब लोग मतलब है ना, तो अगर आप अच्छा करेंगे, अगर टिकटें नहीं बेचेंगे आप, कहाँ से पैसे आएगा? सारा मतलब टीवी वाले से तो नहीं आएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आप कॉपीराइट देते हैं आप, है ना, कॉपीराइट देते हैं, सारा उससे तो नहीं आएगा। उसमें कुछ तो आप टिकटें बेचेंगे। आप फॉरेन पे देखिए, फॉरेन पे देखिए आप कुछ भी करो सब लोग टिकट लेंगे, सब लोग टिकट लेंगे, टिकट देख के शो देखते हैं। आपको भी ये जरूरत पड़ेगी, हमारे को सबको जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे। तो सरकार का रोल क्या है कि मतलब सरकार का पहले जितनी लंबी लिस्ट होगी हमारे को 1000 टिकट दे दे, अपने अपने इसके अलग अलग डिपार्टमेंट के आएंगे, मतलब कितने टिकटें दे दो, फिर उनमें बैठना भी, ये नहीं बैठना कि जहाँ आप बोलेंगे वहां बैठाना कि यहाँ बैठो आप, वो बैठाएंगे, बोलेंगे हमारे को आगे बैठाओ, मतलब वो बोलेंगे कि हमने तो लॉकआउट रूम पे जाना जहाँ पर रेसलर होते हैं, जहाँ के स्पोर्ट्समैन होते हैं, वहां बैठाना। आप बोलेंगे यार तुमने भी शो देखना है, तुमने इवेंट को देखना है, तुम ग्राउंड पे देखो, जहाँ तुम्हारे को सीट दिए वहां बैठो आप। पर वो इतना अपना इन्वॉल्व अपना ये करना चाहते हैं, मतलब उस पेपर की भी जो देना तो उन्होंने कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ फ्री पे परमिशन भी दे दे, अगर आपने बड़ा सा बाद में कि आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम पे बनाना है अपने शो, आई थिंक वहां पर 25,000 की कैपेसिटी है, 30,000 की कैपेसिटी है। तो अगर आप लोग बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पर लेकिन मेरे फिर बात हो ही जाती, कभी गिव अप नहीं करना, सब लोग हम रल के करेंगे ना, सब लोग रल के करेंगे तो ऐसी भी कोई चीज नहीं कि नहीं होती है। सो मेरे सभी के लिए शुभकामना है, आप तकड़े होके करो। और मैं सोचता कि जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनती है ना, शायद ही फॉरेन के भी नहीं होते इतने मेहनती लोग, ठीक है। सिर्फ आपको जरूरत है एक मोटिवेशन की, मतलब कभी भी कहीं आपने ये ना यार डीमोटिवेट नहीं होना, यार नहीं यार मतलब फलाना ने ऐसा बोल दिया, फलाना में हार गया, मैं ऐसा हो गया, बहाना नहीं ढूंढना, मतलब यू शुड बी स्ट्रांग।
जो आपने फोकस बना दिया ना, उसको अपना टारगेट को इधर इधर नहीं करने का, तभी आप मतलब कामयाब हो जाएंगे। मतलब किसी भी फील्ड में अगर कभी हम बार बार सोचेंगे ना, आज जोश है, कल मेरा कोई कुछ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया तो मैं उधर आज नहीं, मैं नहीं कर सकता, इस तरह नहीं होना। मतलब दोस्तों मैं अपनी चलो मुझे तो बात मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मेरी बैकग्राउंड है, मेरी बैकग्राउंड में पहले सबसे पहले मैं शिमला पे होता था, और बैकग्राउंड मेरी मतलब किक बॉक्सिंग और ये कराटे खेलता था मैं वहाँ। तो अपना मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत हाई लेवल पे था। मैं सोचा यार मैं जितने भी बन जाएगा मैं मतलब मारूंगा ना, मैं फटे चल दूंगा। इससे जो अगर आप सीखते हो करते हो, इतना आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत आपका बच जाएगा लाइफ का। कभी आप किसी से डरेंगे नहीं, कभी आप किसी से सुनाना। तो मैं 94 में मैं पंजाब पे आया था। मैं 94 में मैं पंजाब पे आया था, तो उस टाइम वहाँ पर इतना मतलब एक टेररिस्ट का टाइम था। सब लोग मेरे को कहते थे आप मत जाओ पंजाब पे, ये होता है, ये होता है, ये होता है। पर मैं कहता था यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपना जो बोलता ना कॉन्फिडेंस, मतलब वो कॉन्फिडेंस मेरे को पंजाब पे लाया। वहां से जब मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करता था, वही कॉन्फिडेंस मेरे को मतलब अमेरिका लेके गया। अगर मेरे मन पे डर, मेरे को किसी ने भी, मैं बोलता हूँ मेरे को किसी ने ये मोटिवेट नहीं किया कि आप जाओ हम आपके साथ, किसी ने नहीं बोला। पर मेरा अपना जैसे बोलता ना कि जुनून कि यार मतलब सब लोग मेरे को बोलते यार यार WWE तो गोरों की गेम है, हाँ आपकी हमारे इंडियन की गेम नहीं है। फिर आता था वापस यार नहीं यार, मेरे जैसे बोलता ना अपने पावर पे और अपना जो एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मानना भी बहुत तेज था मेरे मतलब। सो वही कॉन्फिडेंस मेरे को WWE पे लेके गया। सो कराटे MMA बहुत अच्छी, आप किसी भी फील्ड पे रहेंगे, किसी भी फील्ड पे रहेंगे आप, तो मतलब आज आप MMA कर रहे हैं, कभी आप छोड़ेंगे, कभी बिजनेस पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई होगा। अगर कोई हाई आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना, तो किसी भी फील्ड पे आप बहुत इजीली जा सकते हैं। Absolutely, एक बार जोरदार तालियां for Mr. Khalid. Thank you so much. Thank you. Khalid here from Entrepreneur India magazine. First of all, I think Khalid, that's the longest I've ever heard you speak. So congratulations on that. My question is for Mr. Sunil Shetty. First of all, congratulations, excellent trailer, very real. And what I wanted to ask was basically that, you know, the name of the show is Kumite One Warrior Hunt, right? So was it sort of, the idea was sort of taken from Bloodsport, the Van Damme movie of 1986, when that song Kumite became very popular, and that is also around that time when you also made your debut with all the action stars. Since you're saying you're very involved with Kumite One is a brand Aliba is associated with, so I think he'll be the right man to answer this question. Got it. I was the warrior hunt bodybuilder. I was looking for warriors, and somewhere down the line found a lot of them. Right. So basically, Kumite One is in Japanese you say it's fight, and the word itself is it's something very different when we pronounce. So it's like K1L, K1W. So I wanted something different, which is like it relate to fight also, and uska ek meaning bhi nikle. So that's why I took Kumite One. One means so one for the one, like we all are one, we all are champions. So like Kumite One, I took it. Thanks a lot. I just like to also, one last line, congratulate whoever's organized the seating arrangement, because Khali has been seated in such a way that everybody's height is looking the same. No, but that's what a sportsman is all about. Absolutely. Even when they're sitting, they're standing. Absolutely. You know, that's why they're different, and that's why the respect for sports. Okay, so we take one quick question. One quick question pertaining to the series, please. Hello sir, my name is Nishal and I'm from Network 18. My question is for Sunil sir. Sunil sir, what made you being associated with the show? You know, what is that one factor that pulled you to this? And secondly, what have you taken away from the show, from the athletes and the champions? What got me to do the show? I think number one, you know, the word different. That's my background. I grew up learning the Okinawa Gojuri style of martial arts under Sensei Pervez Mistry, probably one of the earliest fighters in the country, and
that itself is something that gave me an opportunity, and the image of an action hero in Hindi cinema, so I owed it to that. And then the breakup of martial arts. There's boxing, there's kickboxing, and jiu-jitsu, and so many different formats. When you talk about MMA, it's the coming together of all these formats to prove which one is not better than the other, but which one probably is more effective than the other one. And that's why I keep saying wrestling, 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 because that's about grabbing, that's about power, that's about grit, that's about energy, never say die approach. And I thought I needed to do something different. At this stage of my career, a few years that I didn't even work, I wanted to give back, and I wanted to give back in a big way. And this is one way of nurturing talent from small towns, the BEC, these centers of India, that has so much, but they don't get an opportunity. So for me, it is about opportunity, opportunity, opportunity for these kids. And even if we can make one champion out of this, I think we would have done the job. And for me, the takeaway is never say die. At my age, they keep me going. They teach me new things. Every format has a different way of presenting itself and different forms of training. So I'm only learning. And as far as health and wellness goes, I think it's always better being a student than being a master of anything. Amazing. Before we wrap, I have one question for Sunil sir. So a lot of brands got associated with the contestants. I want to ask you, what are the brands giving back to the MMA world? Oh, so much. And we started the show. There was a lot of pressure because of time. We kept, because of creative reasons, we kept going back and forth. And eventually we all came to one conclusion that we need to make a show that's going to make a difference. It's not about fighting, but it's about the stories, what these kids go through in their home. So once we finalized with that, we had to jump onto the show. But after that, there are a few brands that I've been associated with, and the minute I told them what the show was all about, they jumped on the forefront. And that's why I need to mention Fitter. For example, Fitter is a brand that probably grew during the pandemic. Tough times don't last, tough people do. And Fitter is one example of that. So whether it was JC, Bala, Rohit, I think you need to get up there and show your faces. Thank you for being a part of the show. They've made a difference. They've transformed India, from their very own homes. So it's about giving jobs. I don't even know what they've promised because it's the teams that have been speaking, but it's about giving jobs to all these 18 kids to train them and make them master trainers. So the kids are assured that they can continue to fight while the family is being taken care of. So thank you to these guys for having done that. There is a minimum, and I would like to talk about this because this is a platform that grew during the pandemic, and today some of the coaches get a salary of more than 6 figures. A minimum. 50% of them are probably over 5 lakhs, and the best that are doing it from home. They're women, they're housewives, all kinds of people who are probably overweight one day, and today they're training up to 12.5 lakhs. So that's a lot of money when it comes to health, fitness, following your passion and giving back at the same time making. So thanks to these guys, it has been possible. Then there's Body First, another brand that has grown in the last 2 or 3 years that has guaranteed supplements for the champions and for all 18 of them, through the year, because it's easy to fight, it's easy, I have the grit, I have the determination, I have the strength, I have the technique, but do I have it, the diet for me to continue to be able to do that? Do I have the energy to get injured, get into rehab and then get back? Who's going to take care of all that? That's expensive, that costs a hell of a lot of money. So thank you, Body First. There's Pranay and Sandeep here. I think you need to get up and thank yourself. We'll come forward to support them. Thank you. Then there's Aquatine that has come forward, and
Nishiba come, and guaranteed vitamin water, all the supplementation from a recovery perspective, ready to take care of them through the year. So thank you very much. Then there's Samir with riders and cycles for the champions. So a lot that is being given back. Probably brands that are associated with us at the later stage, but tomorrow when we get into season 2, I think there's so much that they are willing to do, and there's so many others who are ready now and say, you know what, कि हम हैं यार, इनको हम support करेंगे. I think मैं हर एक से मांगने जाऊँगा कि ये एक ऐसी शो है कि मांगना जरूरी है, और यहाँ मैं इनसे मांगा हूँ, कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और इन बच्चों के लिए आपको आगे आने की ज़रूरत है. So thank you for all of them who've come forward and said we are a part of your journey and for believing in me. Absolutely. Thank you so much, all of y'all, and we're absolutely looking forward to 12th of February when the show is going to be streaming, and everything that we heard about right now has definitely built a lot of curiosity. Like we said, it's not just feeling good after watching the episode or feeling entertained. It's a lot of inspiration, there's a lot of motivation, and there's a lot of thought as to what all goes behind making a champion. Right from, like Sunil sir said, recovery, injuries, vitamins, supplements, help by all means, and a huge round of applause to the entire team of Warrior Run for bringing all of this together. And also multi-faith gyms, I forgot, they're a brand that is across the country and ready to onboard the kids anytime, even if it's from a job perspective or training or any other facility that they need to continue their journey of fighting, risking their lives to make sure that their families and everything is taken care of. So That's thank you. That's phenomenal. This show definitely is so wholesome by all means, and so looking forward to 12th of Feb when the show will start streaming on MX Player. Kumite One, Warrior One, ladies and gentlemen. And we're gonna have a photo opportunity right now. Are we gonna have a photo opportunity? हो गया It's done. Okay, great. All of you have got pictures. Thank you so much, everybody. Okay. अरे इतने अच्छे कौन है? वाह क्या लाइट है भाई. किधर था अभी तक? भाई मैच नहीं हो रहा. नीचे बैठना चाहिए वो कैमरा मस्त 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 एकदम. चैंपियन लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, मैं बेल्ट के साथ आया. चलो साइड जाओ गाइस. बस रे एक हाथ में ले लो. आगे चेयर वाले बॉस, आगे चेयर वाले नीचे हो जाना प्लीज. बॉस तेरे बाल बड़े लगे हैं. क्या मतलब है? बाल नीचे करना है. ये मेरा नहीं, ये तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना. मुंडी पड़ रहा है बस. भाई मोबाइल से बाल बड़े लगे. ये बाबू ये एसबीएस. बंद करो.